विंटर्स मुझे पर्सनली बहुत लेज़ी बना देती हैं क्योंकि मेरा पर्सनली मन करता है कि बस एक ब्लैंकेट हो, आगे टीवी हो, कोई पॉपकॉर्न या कुछ गरम फूड एंड वन हॉट चॉकलेट कप या फिर हॉट कॉफ़ी एंड बस आई एम सॉर्टेड। Hello, Gradsouls, how are you? I'm Karishma Verma, aka Caddy. मैं एक ब्लॉगर हूँ एंड आई ब्लॉग ओवर एट gradisoul.com GRATISOUL। मेरा ब्लॉग है अबाउट सेल्फ लव, पॉजिटिव वाइब्स एंड मोटिवेशन। सडनली काफ़ी सर्दी हो गई है ना? What about you? How are you feeling? Is it summer? Is it winter in your capital, in your city or not? Comment below. विंटर्स मुझे पर्सनली बहुत लेज़ी बना देती हैं क्योंकि मेरा पर्सनली मन करता है कि बस एक ब्लैंकेट हो, आगे टीवी हो, कोई पॉपकॉर्न या कुछ गरम फूड एंड वन हॉट चॉकलेट कप या फिर हॉट कॉफ़ी एंड बस आई एम सॉर्टेड। लाइक मेरा विंटर्स में पर्सनली प्रोडक्टिव मैं मोटिवेट अपने आप को करते रहती हूँ कि आई शुड डू दिस, आई शुड डू दैट, बट इट इज़ वेरी टफ। What about you? How do you feel in winters? आलस आता है या फिर you get energy? वैसे it is very tough to get that energy, but comment below. So if you need some tips on how to stay productive during winters, then don't worry, I have written a blog क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ. So you can check out that blog. The link to that blog is in the bio, जिसमें मैंने बताई हैं 4 tips on how to stay productive during winters. So go check it out. Well, after this video, go check it out. Okay, so now enough of self-promotion and now let's start this video. But before we start, make sure that you are subscribed to Gratisoul for free positive vibes. And if not, then do click on the bell icon below. Well, क्योंकि winters की बहुत बात हो चुकी है अब तक, so now let's come to the main topic of climate change. क्लाइमेट चेंज इज सच अ सीरियस टॉपिक कि जिसके बारे में लोग अब तक अनअवेयर हैं कि हाउ इट कैन अफेक्ट आवर फ्यूचर, वेयर इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड अफेक्टिंग आवर प्रेजेंट। ग्लोबल वार्मिंग, आइस मेल्टिंग, एयर पोल्यूशन, ये सारा सिर्फ दिन भर दिन बढ़ रहा है, विच इज लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज एट एन अलार्मिंग रेट। Start thinking about how your past mistakes are leading to this present so that you cannot repeat those mistakes and leave behind an improved future. ये तो हो गई हमारे एक्सटर्नल क्लाइमेट की बात. Now let's talk about something which nobody generally talks about, and that is your internal climate. Confused what I'm talking about? I'll explain. गार्डनिंग, ग्रीनरी, प्लांट्स, ये सब पसंद है? If yes, if no, comment below. Even if you don't like plants or greenery or gardening in general, we still knowingly or unknowingly plant the seeds and weeds into our mind every day. Again confused? I'll explain. जब भी हम कुछ देखते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या कुछ भी सुनते हैं, आवर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड प्लांट्स दैट इनटू आवर ब्रेन. दैट कुड बी सीड्स ऑफ विजडम और वीड्स ऑफ ट्रैश, एंड दैट अल्टीमेटली डिग्रेड्स और अपग्रेड्स आवर इंटरनल क्लाइमेट. So instead of reading, watching or listening it carefully, read it mindfully. I'll tell you 10 ways in which we are knowingly or unknowingly degrading our own internal climate. Wasting our time over pointless drama. Holding on to toxic people. Fixing our mind on the same pattern and not trying different things. Developing an ungrateful method to live your life. Repeatedly focusing on your past and your future instead of focusing on your present. Overthinking. Thinking more, doing less. Repeating the same mistakes instead of learning from them. Having grudges instead of solving them. Making an excuse instead of accepting responsibility.
So if you could relate to any of those above 10 points, then now is the time to take some action to upgrade your internal climate. I'll tell you how. I'll give you the solution on how you can upgrade your internal climate. Wasting your time over pointless drama. Set your priorities straight. अगर इतना टाइम किसी और पे लगाना ही है तो उससे बेटर अपने ऊपर लगाओ ना, where you can focus on yourself and improve yourself. So set your priorities goddamn straight. Holding on to toxic people or having grudges against someone instead of coming up with a solution, either talk about it and resolve or just let it go. But उस चीज़ को पकड़े रखना is not a solution. It is harmful for your own mental health. So do what is needful. Fixating your mind on a set pattern instead of trying different things, soon you will get bored of it and leave. So before that happens, just explore. ये दुनिया सर्कल है, बट ज़रूरी नहीं कि तुम्हें उस दुनिया के अकॉर्डिंग चलना है. If you are bored of what you are doing right now, then just explore before you finally settle. Developing an ungrateful method to live your life. शायद इस दुनिया के किसी कोने पे कोई एक ऐसा इंसान होगा जो तुम्हारी जगह आने के लिए कुछ भी कर सकता है. Think about it and be grateful. Repeatedly being worried about your past mistakes or how your future will turn out eventually instead of focusing on the present. Well, let me tell you कि आपका past खत्म और आपका future अभी आया नहीं. All you have is right now, which you are ruining it by thinking about unnecessary things. So start focusing on yourself right now and just concentrate on how you can improve your present. So just live in the moment and enjoy it. It's that simple. Making an excuse instead of accepting responsibility. Soon others will stop relying on you. So start being accountable for your own mess. वैसे एक सीक्रेट बताऊं, ये जो हमारी प्रॉब्लम्स है ना, ये सारा एक माइंड गेम है विच इज़ वेरी सिंपल टू सॉल्व, बट हम उसको सोच सोच के बड़ा कर देते हैं एंड इवेंचुअली हम अपने ही इंटरनल क्लाइमेट को डिग्रेड कर देते हैं. सो इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग योर माइंड, यू शुड नो हाउ टू ट्रेन इट. Train your mind, train your thoughts so that it can have a practical response to every situation. क्योंकि हर प्रॉब्लम ना इतने से स्टार्ट होती है जो सोच सोच के इतनी हो जाती है. So the choice is yours कि इतने पे ख़त्म करना चाहते हो या इतना बढ़ा के इतनी टेंशन लेके फिर ख़त्म करना चाहते हो. अगर आप इन 10 प्रॉब्लम्स में से किसी एक या दो प्रॉब्लम से भी रिलेट कर पाए, दैट इफ यू आर आल्सो गोइंग थ्रू दैट सेम फेज, सो आई होप अब आपको अपना सोल्यूशन मिल गया हो एंड यू विल स्टार्ट एक्टिंग अपॉन इट. Also, if you think that I've missed out on some points which can degrade our internal climate and you think that they are important, you are free to share them in the comments below so that everybody can know about it and maybe uska solution bhi mil jaye. I hope that now you are aware about your internal climate and you'll introspect on how to change it if the change is required. And share this solution with others so that they can also upgrade their internal climate because sharing is caring. So take care of your external and your internal climate for your own good. Just stay in sync with your internal climate and keep on upgrading it because now you know. अगर ऐसी ही लाइफ एडवाइजेस और चाहिए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना. Just like, share and subscribe to Bratisol and get positive vibes free. Okay, bye.